Hello guys, assalamu alaikum. I hope you are all fine. So in today's video I am going to make a puff flower which is very easy. I'm going to use the 4 ply yarn and 4 millimeter crochet hook and let's start without wasting our time. First of all I will make a slip knot like this. Again slip knot, chain 4, 1 2 3 and 4, chain 4, make a slip stitch into the first chain, like this. Now I have a circle. Now I am going to work in this circle. Chain 2, yarn over, make chain 1 and make 8 single crochet into this circle. 1 2 3 4 5 6 7 8. Make a slip stitch into the first chain, like this. Now chain 2, make 5 loop on your crochet hook into the same first chain. The loops should be of same length. 1 2 3 4 5. One more. I will make 6 loop on my crochet hook, yarn over, pull through all, chain 1 2 3 4, make a slip stitch into the same chain like this, one slip stitch into the next chain like this. Again chain 3, yarn over, make again 6 loop, 1 2 3 4 5 6. Chain 1 2 and 3 4, make a slip stitch into the same chain, slip stitch into the next chain like this. In this way I will complete this flower. It's very easy to make. Flower is complete. I will hide these leftover parts later. It's very beautiful and fascinating.
I completed these flowers. Like, I will sew these later. Like this, like this, like this, like this, like this, like this. Okay. कैसी लगी आपको वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके, ये वाला पार्ट, सॉरी, हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि ये वाला पार्ट भी हम आपको बनाना सिखा देते हैं। इसको बनाने के लिए हम स्लिप नोट बनाएंगे, चेन 1 एंड लूप बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 लूप बनाने के बाद यार्न ओवर करके सारे लूप में से निकाल देंगे। ठीक है, यार्न को कट कर देंगे और इसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे हम। या तो इसको सुई के ज़रिए से अटैच करेंगे या इसको हम ग्लू गन के ज़रिए से अटैच करेंगे और आपका जो फ्लावर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, बाय।